Good morning, students. Today we are going to discuss about some arithmetic function. Arithmetic function. One is Euler function. Divisor functions. Sigma functions. Euler function we have already discussed. Now divisor function denoted by dn is defined as for any positive integer d of n is the number of divisor. For example, 6. 6 को how many divisor of 6? Divisor of 6 are 1, 2, 3 and 6. Then d of 6 is equal to 4. So divisor function means the number of divisor. Function defined summation of all those divisor of n 1. 1 means इसके कितने डिवाइजर होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, जितने डिवाइजर होंगे उतनी बार 1 को ऐड कर देना है. नाउ सेकंड फंक्शन इज सिग्मा फंक्शन. Sigma function represented by sigma n is defined as the sum of divisor of n. For example, sigma 6 is equal to divisor of 6 1, 2, 3 and 6. So sum of the divisor is equal to 12. सिग्मा फंक्शन. तो जो डिवाइजर होंगे उनका सम आ जाएगा. इसको डिफाइन भी ऐसे कर सकते हो, सिग्मा डिफाइन फ्रॉम द सेट्स ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डिवाइजर ऑफ n d, वेयर d इज अ डिवाइजर. जो जितने भी डिवाइजर है जो n को डिवाइड करते हैं उनका सम, दैट इज सिग्मा n होगा. नाउ नेक्स्ट perfect number. Perfect number means a number is equal to sum of its divisor, sum of its divisor
except itself. For example, 6 के डिवाइजर क्या बनते हैं? डिवाइजर ऑफ 6 दैट इज आर 1 2 3. तो 6 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3. एक्सेप्ट इटसेल्फ, 6 को छोड़ के यदि कोई नंबर उसके डिवाइजर के रूप में लिखा जाए, सम ऑफ द डिवाइजर के रूप में लिखा जाए, तो क्या होगा? परफेक्ट नंबर. 28 1 2 4 7 14 is also a perfect number. So perfect number, a number is equal to sum of its divisor except itself. Now some condition on the divisor and sigma function. Divisor of 1 equal to 1 का. Now sigma of 1 is also 1. Divisor function of n is equal to n is a prime number. तो n का डिवाइजर क्या बनेगा? is equal to 2 if n is prime number. For example, 5 is a prime number and divisor of prime number 1 and 5. तो क्या बन गया? 2. And sigma of n, if n is a prime number, then n plus 1. For example, यही ले लो. 5 is a prime number and divisor of 5 1 and 5. तो ऐड करेंगे तो क्या बन गया? 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 6. 6 आ जाएगा. n + 1. Now some theorem on the basis of these functions, या divisor of n और sigma of n. Now first theorem on the basis of arithmetic function. If n is equal to p1 raised to power k1 into p2 raised to power k2 up to pr raised to power kr, where ki are greater than equal to 1 and pi's are the distinct prime factor of n, then divisor of n is equal to k1 plus 1 into k2 plus 1 up to multiply kr plus 1. n is equal to p1 into raised to power k1, p2 raised to power k2, pr raised to power kr. Thus the prime नंबर कितने से डिवाइड होता है? फॉर एग्जाम्पल 3 raised to power 2, ये प्राइम की पावर है. इसको कितने नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा. 3 raised to power 4, 3 raised to power 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 raised to power 4 से डिवाइड हो जाएगा. यानी कि जो पावर है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं, वो नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ प्राइम नंबर आ जाएंगे. दैट द ओनली डिवाइजर ऑफ
pi raised to power ki are 1 pi raised to power 2, pi raised to power 3, pi raised to power ki। ये इसके डिवाइजर बनेंगे। For I want to R किया। नंबर ऑफ डिवाइजर, तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितना हो गया, जैसे हमने यहाँ पे किया, द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ पी आई के आई इज के आई प्लस 1 for all I want to R. So every divisor of pi also divide the n. So we know that every divisor of pi raised to power ki is also divisor of n, divisor of n. So divisor function of n is equal to k1 plus 1, k2 plus 1 into k3 plus 1 up to kr plus 1 इसके इक्वल हो जाएगा। और this can also be written as divisor of n, divisor of p raised to power k1, divisor of p2 raised to power k2, divisor of divisor function of p raised to power इसको हम ऐसे लिख सकते। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम, इफ n is equal to this, where ki is greater than equal to 1 and pi are the distinct prime, then sigma functions of n is equal to p1 raised to power k plus 1 minus 1 divided by p1 minus 1 into p2 raised to power k2 plus 1 minus 1 p2 minus 1 ये प्रूव करना है हमें। डिवाइजर ऑफ पी आई रेट टू पावर के आई आर 1 पी आई p1 p2 so pi square pi cube pi raised to power ki, where I is equal to for all I is equal to 1 to r. Now sum of these divisor, sum of divisor, ये क्या है, इन सब का सम, ये जीपी सीरीज है विद कॉमन रेशो पी आई, ये जीपी सीरीज है। यदि इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 1 2 3 4 और एक ये, तो के आर प्लस 1 के आर, इसको आप आई ले लो के आई, वेर आई 1 to r, नंबर ऑफ टर्म्स के आई प्लस 1
तो सम ऑफ दी GP टर्म्स, फर्स्ट टर्म A PI raised to power KI plus 1 means common difference raised to power number of terms minus 1 PI plus 1 minus 1. First term A is equal to 1, so this will be equal to this. इन सब का सिर्फ एक प्राइम अगर हम मान के चले तो उसका सम इसके इक्वल हो जाएगा। तो टोटल प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, ये। तो सम ऑफ ऑल द प्राइम्स फैक्टर is given by sigma n, that will be equal to sum of divisor of n equal to p1 raised to power k1 plus 1 minus 1 p1 minus 1 p2 raised to power k2 plus 1 minus 1 divided by p2 minus 1. Or this can be written as some sigma functions of p1 k1 into sigma function of p2 k2 sigma function of PR raised to power PR. फर्स्ट रिजल्ट तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट थ्योरम इज द फंक्शन डिवाइजर फंक्शन एंड सिग्मा फंक्शन आर बोथ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। So we have proved that d of mn is equal to d of m into d of n, where m and n are distinct prime. ये बहुत सारे प्राइम नंबर हैं, या ये कह सकते हैं दोनों के दोनों को प्राइम पॉजिटिव नंबर्स हैं। Also prove that sigma of mn is equal to sigma m sigma n, where m and n are co-prime. Now proof of this, we have some cases to prove that. First case, if m and n equal to 1, both are equal to 1, then d of mn equal to d of 1, and d of 1 divisor 1 का क्या होता है 1, this can be written as d of 1, d of 1 means d of m d of n. When both are equal to 1, so divisor function is a multiplicative function. Second case, if one of them is not equal to 1, say m is equal to 1 but n not equal to 1, one of them, ये हो सकता है ये इक्वल टू 1 हो जाए, दोनों केस में एक ही चीज है। देन mn is equal to n, अगर ये m इक्वल टू 1 है और n 1 के इक्वलिटी नहीं है तो mn की प्रोडक्ट n इक्वल होगी। तो डिवाइजर फंक्शंस ऑफ mn is equal to divisor of n 1 into divisor of n, and 1 is can be written as d of m d of
ये दोनों केस में हो सकता है, m नॉट इक्वल टू 1 हो, n इक्वल टू 1 हो, तो दोनों केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, d फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली फॉर सिग्मा फंक्शन, सिग्मा mn फॉर केस second case for sigma mn equal to sigma of n, this can be written as 1 into sigma of n and 1 is sigma m sigma n. For both the functions, for m is equal to 1 and n not equal to 1, divisor functions or sigma function both are multiplicative functions. Now, if n and m both are not equal to 1, then they find the fundamental theorem of arithmetics that n is equal to p1 k1 या a1 a1 a2 PR raised to power AR and M is equal to Q1 B1 Q2 B2 QT BT. Now product of Mn is equal to P1 A1 P2 raised to power A2 PR raised to power AR, Q1 raised to power B1, Q2 raised to power B2, QT raised to power BT. Now divisor function या sigma function, first divisor function is equal to, हमने अभी प्रूव किया था कि P1 divisor functions of P1 K1 is equal to K1 plus 1. So A1 plus 1, A2 plus 1, AR plus 1, B1 plus 1, B2 plus 1, BT plus 1. Now, this will be equal to divisor functions of n and this divisor functions of m. If m and n both are not equal to 1, then divisor functions of mn is also a multiplicative functions. Now second, mn is equal to this, so sigma functions of mn is equal to p1 raised to power a1 plus 1 minus 1 divided by p1 minus 1.
So this product, this part of product is sigma n and sigma m. This part of product is equal to sigma m. So if m and n are co-prime, both are co-prime, then divisor function and sigma function are multiplicative function. We have proved that, hence proved. Next problem, for n greater than 1, an integer n which is greater than 1, divisor function of n is odd if n is a perfect square. अगर n परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये ओड होगा, अगर ये ओड होगा तो n परफेक्ट स्क्वायर होगा. Now for fundamental theorem of arithmetics, n can be written as p1 raised to power k1, p2 raised to power k2, pr raised to power kr, where pi's are distinct prime. And all ki are greater than equal to 1. प्रूव करना है कि ये ओड होगा. Then divisor of n equal to k1 plus 1 into k2 plus 1 kr plus 1 now if divisor functions of n is odd, if divisor functions of n is odd, if and only if k1 plus 1 k2 plus 1 is also odd, ये प्रोडक्ट भी क्या होगी, ओड हो जाएगी. और if and only ki is odd for all I equal to 1 to r, ये सब i क्या हो जाएंगी, ओड. यदि इनमें से एक भी इवन होता तो ये प्रोडक्ट क्या है, ओड नहीं होती. इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी की सभी क्या होंगी, ओड होंगी. odd. This implies if ki plus 1 is odd, अगर ये ओड नंबर है, जैसे 3 है, ओड नंबर है, तो इसमें से 1 लेस कर दें तो 2, 5 में से 1 लेस कर दें तो 4, ये ओड नंबर है, इससे एक कम क्या हो जाएगा, even. This implies ki is even for all I from 1 to r. So this implies ki is equal to even means multiple of 2, say 2mi, for I is equal to 1 to r. Now n is equal to p1 raised to power 2m1, p2 raised to power 2m2, pr raised to power 2mr, and this can be written as p1 raised to power m1 into p2 raised to power m2 into
PR raised to power MR raised to power 2 n. N is a perfect square. For any integer n greater than 1, if divisor function of n is odd, if and only if n is a perfect square. तो हमें ये पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स n can be written as the product of all these primes. So divisor function of n is equal to k1 plus 1 into k2 plus 1 up to kr plus 1. We have given that if divisor function is odd, then this product is also odd. अगर ये प्रोडक्ट ओड है तो इसका मतलब all these ki plus 1 is also odd. अगर एक भी प्रोडक्ट इसमें इवन होता तो ये प्रोडक्ट ओड नहीं होती. So ki is even, this can be written as multiple of 2, and so we have proved that n is a perfect square.